Hello all, welcome all. Uh, Today's major topic as your बहुत interesting topic अच्छी that is your hot spring and geysers. Hot spring geysers normally बहुत interesting लगे मोर भी आज भी मने अच्छी पढ़ला बड़े सब बड़े माइंड रे गोटे थाए गुड मॉर्निंग सब बड़े माइंड रे थाए कि अरे हॉट स्प्रिंग कौन गीजर्स कौन आमे एटा तो बहुत सुनिचु तो केमती कौन लगे गीजर तो जो नॉर्मल लगे कि अरे घरे भी तो गीजर अच्छी सो व्हाट इज दिस गीजर right? So one by one आज details analysis करियो and it's a very interesting fact को country कौन अच्छी basically जदि हमें देखिबा कि ऑप्शनल रे जो ऑप्शनल एटा बहुत बड़ गोटे फैक्ट एटा गोटे कि नो अबाउट एंड मोस्टली रिगार्डिंग जदि हमें देखिबा कि एनालिटिकल फैक्ट जदि मु कहबी इट इज अबाउट द जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जियोलॉजी रे एमती कोन हिची काहे कि एमती पानी अनवरत रहिची बहुत जगह अच्छी इवन इफ इंडिया रे जेमती अच्छी वर्ल्ड रे जेमती अच्छी इंडिया रे अच्छी सेमती ओडिसा रे भी सेमती बहुत जगह अच्छी लेट अस नो इन डिटेल हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स राइट हॉट स्प्रिंग और गीजर्स जदि कहबा कि नॉर्मली राइट जियोलॉजिकल रीजंस मु आज मु कहबी कि कोन ला गीजर्स प्रथमे देखिबा कि geysers are jadi we'll discuss geysers are basically at the fountains of hot water normally hame dekhiba ki fountains of hot water just look at here eta gote geyser mu dekheichi this is an geyser in New Zealand kemti tame dekhucho ki you know it comes out from the beneath the matti tolu from the crust it comes out hela baharu it comes out from the surface just look at here so सेमती जानिबाटी नॉर्मली कौन ही थे जदि देखिबा कि गीजर्स आर हॉट वाटर ओके हॉट वाटर बट सेमानकर जदि देखिबा कि गीजर्स और हॉट स्प्रिंग भितर आज हमें ता भी जियोलॉजिकल डिफरेंस करबा दे आर जस्ट जदि हमें देखिबा कि दे आर द हॉट वाटर दैट कम्स आउट बट ता भितर कोन हो विथ एक्सप्लोसिव नेचर जोटा कि हॉट स्प्रिंग रे सेटा हुएनी दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट you have to observe this one right or remember this one. So geysers से देखियो they are the fountains of hot water and superheated steam basically superheated steam काहे को आजे because they are in a steam condition तुमको जदि कोनोस गीजर पाखु जिवो तुमको देखियो धुआंधा जेमति हमरो अछि एठी तप्त पानी अट्री हैला एठी गीजर्स जदि हम देखिबा ओके हम ओडिसा कथा हम कहूची हैला देन नायगढ़ रे तमर अछि देन बारहमपुर रे भी अछि ओके जेमती मु कभी हिमाचल प्रदेश रे सबुरो मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश रे भी अछि हिमाचल प्रदेश रे भी अछि हिमाचल प्रदेश जोड़ा ज्वाला माता टेंपल हला सेही जगह रे तमर बहुत सारा तमे गीजर्स पाइबो ओके सो देखिबा गीजर्स आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड सुपरहीटेड स्टीम दो ejected with explosion right they are ejected with explosion from the underground source basically underground source से समाने eject हो जानती and through a hole or cracks in the ground intermittently geologically जदि वो सेटा को से डायग्राम रख करे हमें बुझेबी किंती कि how it comes out what are the causes that it comes out काहे केमती होची that they comes to the cracks एटी तल लिखले it comes to the hole or the cracks in the ground से जो holes और cracks थाए सेथरे से माने बाहर को आसंती right. Natural geysers are the hot spring जदि हमें देखिबा कि natural geysers they are the hot spring that erupt with water and steam due to underground heating जेहेतु underground heating था erupt with hot spring that are erupt with water and steam right that due to underground heating हुए केमती वर्तमान यार डिटेल हमें जानि हैला सब जिनस देखो जदि हमें देखिबा कि डिटेल रे जानिबा बहुत जरूरी काहे कि तमे आंसर राइटिंग मेंस रे करि परन खास करके व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शनल फाउंटेन अच्छा प्रभु पचारछि सर फाउंटेन माने कोन जेमति फाउंटेन माने जेमति तमे देखिथिबो फॉर नॉर्मल एग्जांपल पार्क रे देखिथिबो पार्क पार्क हो कि मॉल हो तमे तले जाउछो देखिथिबो कि पानी आपे आपे बाहर फाउंटेन माने it a natural spring of water where the water is ejected automatically माने आपे आपे पानीटा जिंदी बाहर थो तुमको लागे ना फाउंटेन है ना फाउंटेन ताको कहै जाय इंग्लिश ताको फाउंटेन कहै जाय आ ओडिया जदि हम कहबा कि पानी आपे आपे जोड़ा बाहर जेमति तमे है ना छोट स्प्रिंग जेमति झरना सेमति फाउंटेन रे द बेसिक डिफरेंस कोन हो कि फाउंटेन रे कोन हो पानीटा बहुत जोर रे ऊपर को आसे हैला नॉर्मली तमे पार्क रे देखिथबो आउ मॉल रे देखिथबो दैट पानी ऑटोमेटिकली ऊपर को आसे हैला बट सेटा तो आर्टिफिशियली मेंटेन होता है बट हियर इट इज फाउंटेन मींस वी कैन से स्प्रिंग झरना टाइप रो फाउंटेन भी हमें सेटा कहि परबो इज इट ओके प्रभु सो नॉर्मली जदि जियोलॉजिकल रीजंस वर्तमान आसीबो कि जानिबा एनालिटिकल बहुत जरूरी वर्तमान प्रीलिम्स भी हमर सेमति नै प्रीलिम्स भी पचारु चंती
normally you have to go in detail prelims रे बुझिया को पड़ुची, otherwise it is very difficult हैला statement based questions करिया, mains रे optional तो बहुत mandatory सेटा. So normally देखियो geological regions कौन अछि? Geological regions देखो normally कौन हुए, this is this is an water बड़े jungle, suppose I am taking an surface area of, let's say, in a forest area. So water कौन हो, water it is groundwater. So water through the pore spaces है, these are the cavity or pore spaces. पानी कौन हुए, এই বর্ষা পানি এই ছোট ছোট ক্ষুদ্র মানে I mean in a four ছোট ছোট जो ক্ষুদ্র কণা থাকে তার ভিতরে পানি seepage way, the water passes through these pore spaces and it reaches to the underground. पानी कौन हुए छोटे छोटे कणारे क्षुद्र कणारे सिथरे कौन हुए पानी पास करे and it reaches to the underground surface where एटी तमे देखुचो porous rock एटी इतरे पानी accumulate हुए ला एई जगह कौन हुए your accumulates underground water, right? underground water accumulation. Okay, underground water accumulation. So normally कौन था magma chamber, just look at here, this is a magma chamber, right? Magma chamber is there, and when magma chamber normally so ये जो pore spaces, these are the superheated water it लिखा है, these are the streams. Normally कौन हुए ये छोटे छोटे जितने cracks, these are the cracks. Okay, this is surface area रे ये these are the cracks develops, these are the cracks or fissures जहाँ भी तुम करो cracks or fissures. तो पानी धीरे धीरे कौन हुए ये जगह से जमा हुए. So normally what happened, ये जो rock टा अच्छी, okay, ये rock टा कौन हो, this is magma chamber, ये कौन हो induced effect रे गरम हो जो, means I mean this particular rock is indirectly induced माने not directly, indirectly heated through the heat that is generated emitted from the magma chamber. So automatically कौन हो पानी गरम हो. But ये जो जगह रे कौन अच्छी जेहेतु crack अच्छी छोटे small crack, the water through जदि हमें जानी चंती कि physics रे कौन chemistry surface chemistry में कौन पढ़ी चंती कि water बाहर को आसे, okay, surface tension रे पानी टा केमती ऊपर को आसे हैला surface tension रे ऊपर को आसे काहे ना pressure रहता है जाके. So normally so what happened, water comes out. So ये जो पानी टा comes out ऊपर को हो, these are the superheated streams, these are known as your geysers, right? These are known your geysers or superheated stream or superheated stream. So normally geysers आउ जदि हमें देखिबा कि hot spring भितरे difference आज हमें डिस्कस करबा. geysers हला पानी टा explosion है कि बाहर, but hot spring रे quietly बाहर बहुत शांत आकर बाहर. एठी कोन हो बहुत जोर रे माने शब्द करी के बाहर, right? These are the geysers. आउ normally geysers रे आउट डिफरेंस कोन था, geysers रे तमरो water रे जो temperature टा that is comparatively higher than the hot spring. मान रखो hot spring रे जने गाधे परियो किंतु geysers रे नुह हला, to be very clear. ठीक अछि. So हमें geologically जानले, geologically reason that a magma chamber earth beneath when it due to the induced heating effect, the rocks, the porous rocks where the water is filled in the cavity, they get heated, and through the pressures, acute pressures or the process of surface tensions, the water comes out to the earth surface. Then these are known as your geysers. And basically geysers with explosion, they come with the explosion, unlike your hot springs. We'll come back to that one, right? So geysers they are primarily associated with the volcanic regions. Majorly they are associated with the volcanic regions, like where the temperature of water is above boiling point. पाखापाखि जो तुम देखियो temperature टा 100 degree centigrade ऊपर को था. Can you imagine 100 degree centigrade तुम यदि गाधे हो तुम देह जली जिवो, right? So normally कौन होला कि हमें जानले कि geysers are quite higher temperature, okay, जो तरह की तमर जदि देखियो पाखापाखि 2 or 3 times कम था तमर hot spring रे, right? आगु जीवा सेम जिंस हम कहबी. So look at here. So एठी जदि हम देखिबा कि geysers are mainly confined world रे एमति को जगह रे थाय तमर geysers जो देखिबा it is confined to the Iceland, home to the geysers. कहा जाए Iceland गोटे country which is home to the geysers basically, right? New Zealand and Yellowstone National Park in Wyoming state of USA. Good morning Jitendra. So normally हमें जानले कि world रा major तीनटा जगह जो थ्री की तमरो थाय, that is your Iceland and home to geysers. Basically we'll discuss that one, and then New Zealand and the Yellowstone National Park in Wyoming. One by one we'll discuss.
Normally जदि देखिबा geysers in Iceland केमति रहिछि, I just look at here the diagram. This is the geysers in Iceland. Iceland is a small tiny country. Just look at here. This is your Iceland, right? Then Iceland home to the geysers and hot springs. This is Iceland. Iceland is a small country in the northern hemisphere, right? Iceland jodi dekhiba, it is in northern hemisphere. The northern hemisphere re achi. It is at jodi capital dekhiba, our capital is Reykjavik, right? Your capital is your Reykjavik. Sorry, the capital is your Reykjavik, right? Capital is your Reykjavik, right? Capital is your Reykjavik. So वर्तमान हमें देखिबा कि हॉट स्प्रिंग एटी देखिले कि गीजर्स जियोलॉजिकली रीजन्स हमें बुझिले कि magma chamber when it attached with the magma chamber, right? Magma chamber then केमती rock ta induced effect रे heated हे होची, then this water when it comes to due to the process of surface tension when it comes out to the earth surface, it is known as your geyser. But geyser रे explosion थाए, hot spring रे न थाए. वर्तमान देखिबा कि जेमती तमे देखले आइसलैंड रे जदि देखिबा कि आइसलैंड रे बहुत मात्रा रे योर गीजर्स और हॉट स्प्रिंग मिले वर्ल्ड रे, राइट? बिकॉज़ गोटे वोल्केनिक और जदि हमें देखिबा कि गोटे फॉल्ट लाइन ऊपर तमर आइसलैंड अछि, प्रीवियस वीडियो रे कहि छी गोटे फॉल्ट लाइन जोन्स ऊपर आइसलैंड अछि, एंड आइसलैंड जदि देखिबो कि इट इज धीरे धीरे यू नो श्रिंक करूछि बिकॉज़ ऑफ दिस टेक्टोनिक एक्टिविटीज. सो नॉर्मली कोन हुए वोल्केनिक रीजन्स रे समान देखा जाती है, कन्फाइंड टू द आइसलैंड बेसिकली, हला वोल्केनिक रीजन्स जोटी हमें पढिले एसोसिएटेड विथ द वोल्केनिक रीजन्स. सो वर्तमान देखिबा सेमती न्यूजीलैंड रे देखो, न्यूजीलैंड रे भी अछि, न्यूजीलैंड दिस इज यू नो न्यूजीलैंड रे वाईओ टापू परीक्षा रे पचार देती वाईओ टापू कोठी वाईओ टापू जोटा इन्फॉर्मेटिव मु तुमको देउछि. वाईओ टापू इज एन गीजर एरिया दैट इज फाउंड इन योर न्यूजीलैंड रे देखा जाय, हला. सेमती जापान रे भी अछि हवाई, जापान रे अछि हवाई आइलैंड इन यूएस जोटा कि अछि इट इज मिड ऑफ योर ओशियंस इन पैसिफिक ओशियंस भितरे जापान रे भी देखा जाय बहुत जगह रे. अच्छा वर्तमान गोटे इंटरेस्टिंग मु देखिबे पिक्चर तमे देखो मु लिखि छी कि ओल्ड फेथफुल गीजर्स, राइट? ओल्ड फेथफुल गीजर्स इन यूएसए. या विषय किछि कहबी तमे पिक्चर डायग्राम देखु बहुत सारा लोक ठिया hi चंदी एठी, दे आर वाचिंग दिस वन. कुहा जाय ओल्ड फेथफुल गीजर्स, हला. दिस इज लोकेटेड इन द येलोस्टोन. समस्त नोट करनी जतले पढुछ क्लास रे मु जतले करछि नोट करनो, बहुत सारा इंटरेस्टिंग हो, हला. तुमको मने भी रहइब. येलोस्टोन नेशनल पार्क अच्छी यूएस रे, येलोस्टोन नेशनल पार्क, राइट? नेशनल पार्क, राइट? येलोस्टोन नेशनल पार्क मु करी लिखि दउ छ हमको सुविधा हो. येलोस्टोन नेशनल पार्क कोठी अछि यूएस रा? योमिंग स्टेट, ओके. योमिंग स्टेट रे अछि यूएस रे, योमिंग स्टेट इन यूएसए. कुआ जाय प्रति 66 सेकंड रे एटा बाहर ठप ठप एक बार देखु छ पानी कितने जोर माने सच एन ग्रेटर हाइट it comes to the, yes it is true. बहुत सारा मु सुने जो माने जानती रिलेटिव्स मन कोन सर बहुत सुंदर जगह, ओके. एवरी 6 एटी कोन लिखले it erupts, ओके. it erupts, ठीक अछि. it erupts न लिखि ejects लिखले बेटर हो. it ejects water, it ejects hot water in every 66 सेकंड, हला. प्रति जदि हमें देखिबा, राइट, एवरी 66 सेकंड रे इटा तमरो इरप्ट हुए. कैन यू इमेजिन एवरी 66 सेकंड रे? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशनल पार्क, हला. फेवर्ड नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड. इवन इफ जदि देखिबा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट. यूएस रा मैक्सिमम रेवेन्यू जदि देखिबो, हला, जदि ए योमिंग स्टेट रे जोटा होची इट इज बिकॉज़ ऑफ द येलोस्टोन नेशनल पार्क. बहुत सुंदर एटी बाइजन, यू नो, योर टाइगर बेर, लेपर्ड, बहुत जगह रे बहुत सुंदर सुंदर एटी एनिमल्स होछन. एंड वन रक नेशनल पार्क इज फर्स्ट, देन ह्यूमन इज सेकंड. ई नेशनल पार्क रे कांसेप्ट जदि हम देखिबा ना, वेरी इंटरेस्टिंग. जब यदि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखिबो तुमको बहुत बढ़िया लागो. यू नो इट मु सब बळे आज भी कहबे कि सिविल सर्विस एग्जाम इज ऑल अबाउट द विजडम. खाली तुम एटा केबे भाबनी कि मु परीक्षा पाई पढिबा नंबर अधिक रखबी, सेटा हमर रिक्वायरमेंट. बट जितले तुम निजको हजै देबो कि नहीं मते बहुत सारा पढी बहुत जिंस जानिबार अछि ना, माने अध्ययन करी कि मते जानिबार अछि विजडम नेबार, तो आपे ऑटोमेटिकली हाथ चलिबो एग्जाम हॉल रे.
right? Because this exam is a creative exam, you cannot remember, tame ghusi ki मन रखी परिबनी हैला. It you have to fall in love with the studies to know how the kon achi, you know, what is the perspective, what is the dimension, then only you can reach to the, you know, to the larger state, right? So this is all about the your old faithful geysers जोटा कि कहले येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएस. सो एटा हमें जानले गीजर विषय हमें जानले. नाउ कम टू द बर्तमान हमें एडी जेतु पढिले कि मु कहले कि जियोलॉजिकल रीजन्स मु डिस्क्राइब करले. जियोलॉजिकल रीजन्स रे हमें जानले कि द गीजर्स आर बेसिकली they are come in contact with, you know, the porous rock. When in come in contact with your the magma chamber in an indirect way, induced effect, the water inside the cracks they are getting heated, and when they comes out to the surface, to the process of surface tension good mechanism jota ki surface chemistry achi, they are the they are come known to the hot spring and geyser. Now what is the basic difference mu कहली कि geysers माने semane with explosion, एटी कौन लिखली, fountains of hot water superheated steam they ejected with explosion, मन रख, ejected with explosion, they ejected with explosion हैला, ejected with explosion है कि semane बाहर पूरा एकदम जेमती लागियो जेमती पानी भितरु गोटे बहुत जोर रे गोटे बम तळु पटाइला. But in case of hot spring, right, in case of hot spring this is different हैला. hot spring देखिबा, hot spring जदि नबा, they are known as the normal thermal springs. Basically they are the thermal springs are commonly found in many part of the earth. जदि हम देखिबा जेमती गीजर सेमती hot spring भी प्राय बहुत जगह देखा जाए. hot spring also they found in many parts of the earth where water beneath heated by the interior forces है ना. water कौन हो heated by the interior forces, ठीक अछि, water interior forces माने heat होंदी. the water rises to surface without explosion. देखो एटी मु अंडरलाइन करछि, the water rises surface without explosion. तो बेसिक डिफरेंस हमें कौन जाने कि geysers with explosion, hot spring रे quietly without explosion. That means water comes out quietly, okay, quietly, मन रख. this is माने शांत भाबरे. इंटरव्यू रे भी पचारले तमे ई सब जिंस गुडा एमती वे रे कहि पर जो माने ऑप्शनल स्टूडेंट मन रख, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पचरा हो जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इन सिविल सर्विस एग्जाम ज्योग्राफी ऑप्शनल. ओके, आज तापर भी किछि जिंस कहबी. आ मन रख ई ऑप्शनल रे तुमको बहुत सारा हेल्प हो. जीएस रे तो 3-4टा पेपर रे तुमको हेल्प हो, प्लस तुमरा एसए रे भी हेल्प हो. बहुत सारा जिंस तुम कहबो. बट स्पेलिंग लिखला बेले मन रख क्वाइटली, क्यू यू आई ई टी एल वाई, क्यू यू आई टी लिख देले भूल हे जिवो हैला. quietly माने शांत भाबरे हैला, they comes out to the शांत भाबरे. then the temperature vary with many ranging between 35 to 40 degree centigrade. just mark it here. सेठी थिला केते 100 डिग्री, एठी हैला 35 to 40 degree centigrade. some are much hotter, किछि थांती किछि hotter थांती, hot थांती. the hot springs are natural pools heated by geothermal energy. They are basically the, you know, natural pools they heated by the geothermal energy. basically they are the geothermal energy often containing mineral rich water है ना. बेले को आजे कि mineral rich water बहुत है, believed to be have medicinal, skin healing and relaxation benefit. जदि हम देखिबा कि ना बहुत जगह रे अछि लोक माने जानती जो hot spring को basically हैला, hot spring को जानती से माने गाधे पे को आजे, because it is your prescribed by the doctors that because of its medicinal content. कौन it लिखले, geothermal energy often containing mineral rich water believed to be medicinal, skin healing and muscle relaxation. कौन हुए, कौन mineral rich था. mineral rich are basically थाए तमरा sulfur, okay, sulfur थाए, sulfur, calcium ला mainly थाए. मन रखो सल्फर और कैल्शियम रो प्रेजेंस जोगु कौन हुए हमर स्किन रे बहुत सारा हमर जो स्किन इचिंग हुए, स्किन इरिटेशन हुए, सारा सब बहुत भलो हुए. इवन इफ हमर कौन हुए जॉइंट पेन भी also, you know, calcium पाई कौन हुए, you know, the joints pain, joint pains are are alleviated माने जहार भी कह जाए जहार जॉइंट पेन थाए, जॉइंट पेन गुडा कौन हुए, जॉइंट पेन बहुत भलो हुए. आ मन रखो हॉट जो हॉट स्प्रिंग रे डॉक्टर्स आर जनरली प्रेस्क्राइब. जस्ट लुक एट हियर गोटे डायग्राम रे देखो, तमे देखो किछि लोक आइसलैंड एटी गाधौछन समान. just look at here, just look at the diagram here.
just see few people they are taking bath here तमे देखु छ एठी हैला काहे की few people even if ओडिसा रे भी जदी तमे देखिबो कि हमर जो अछि जो अट्री तप्तपाणी हैला जो हॉट स्प्रिंग हमर अछि ओडिसा रे ठीक अछि हॉट स्प्रिंग बट मन रख माने तप्तपाणी जोटा अछि अट्री लोक माने जानती सेठी गाधांती बट तप्तपाणी आई एम नॉट श्योर बिकॉज काहे ना टेंपरेचर अधिक लास्ट को मु टेबल कर दियो से टेबल टाको मन रखिबो निश्चित रूप कर रखिबो जहां भी तमे पढुछो सब समराइज करिवो राइट so it is a hot spring in Iceland so people are taking bath over there you know because it is medically prescribed medically it prescribed kara hota because these waters medi likhuchi these hot spring waters this water contains mineral like right mineral like sulfur and calcium है मिनरल्स लाइक सल्फर और कैल्शियम से मेनली कंटेंट करथांते आ जोटा कि तांक पे बहुत तांकर स्किन और जॉइंट पेन पे बहुत सारा हेल्पफुल होता है इवन इफ मसल भी रिलैक्स हुए प्रभु लिखुजी सर गंजाम तप्तपाणी रे बी सर यस यस बी तप्तपाणी रे भी जानती गाधिया पे बट नॉर्मली बहुत जगह मना होता है टेम्परेचर देखी कहीं जो जानती गाधिया पे सेतरे जनरली छोट पिला मन को मना करा जाता है कहीं ना तंकर स्किन से डेवलपमेंट होता है बट एडल्ट्स आर जनरली दे आर बहुत जगह देखियो से माने गाइड करन से जगह बिल्कुल ठीक कथा ओके सो हम एटी जानले द बेसिक डिफरेंस एटी देखिले द बेसिक डिफरेंस जदी हम देखले कि यू नो कि हॉट स्प्रिंग और गीजर्स भितरे सो कौन देखिबा हॉट स्प्रिंग और गीजर्स जदी देखिबो आइसलैंड रो आस्काजा क्राटा और हॉट्स प्राय जदी तमे देखिबो कि आइसलैंड गोटे बहुत छोट कंट्री और सेतिरे बहुत सारा तमरो जदी देखिबो कि हॉट स्प्रिंग और गीजर्स आइसलैंड इकोनॉमी इज रनिंग जदी देखिबो कि यू नो द एनर्जी ऑफ आइसलैंड इज ड्रिवन बाय योर यू नो गीजर्स नॉर्मली एटी मु लिखि दोजी द नोट रेट लिखि दोजी तमन लिखि नबो Iceland, the Iceland harness its energy from geysers, okay, from geysers they okay their domestic use then your hotels and offices are dependent upon geyser generated energy है ना गीजर जनरेटेड एनर्जी और पावर मन रख माने एटी गोटे एग्जांपल देखि तांकर जदी होटल को तमे जिवो सेठी तमे हैला आइसलैंड जदी तमे जिवो यू विल फाइंड आइसलैंड रे द होटल्स दे आर बेसिकली देयर एनर्जी सोर्स तांकर जो भी लाइट जलछि फैन जहां भी चलछि हैला लाइट बेसिकली फैन माने तमरो रोसे घर किचन कथा मु कहउछि हैला नॉर्मली सेटा बहुत ठंडा कंट्री इट इज बिकॉज़ इट इज लैटिट्यूडनली हायर लैटिट्यूड कंट्री नियर अबाउट आर्कटिक सर्कल्स पाखा पाखी से माने अछंती तो एई जगह रे कोन हो डोमेस्टिक यूज होटल्स एंड ऑफिशियल्स ठीक अछि ऑफिशियल्स दे आर यूजिंग दैट वन सो आइसलैंड एमती काहे की करछि आइसलैंड कंट्री जदी हम देखिबा हैला कि तार एक तो पूरा टेक्टोनिक प्लेट माने गोटे फॉल्ट लाइन ऊपर अछि प्लस से कंट्री रो देखो बाबू गीजर सर कितने मेजर रोल प्ले करछन तका एनर्जी ड्रिविन पे ओके बट इंडिया तो सेटा नाही सो वर्तमान जदी हमें देखिबा कि इंडिया रे भी किछि किछि जगह रे जेमते हमें देखिबा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट खास करके अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जियोथर्मल एनर्जी यू नो ड्रिवन होछि जेमते एनर्जी रो यू नो बहुत सारा सोर्स अछि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हैला जेमते वर्तमान सोलर एनर्जी हैला सोलर एनर्जी इज एन योर रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स अछि हैला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी अछि सेमते जियोथर्मल एनर्जी भी आसी विंड एनर्जी भी आसी हाइडल एनर्जी भी आसी हाइडल एनर्जी माने हाइड्रो एनर्जी काहे माने असरंती
So normally कौन हबो मुझे जदी कहबे कि geothermal energy, these are basically geothermal energy मन रखो very basics concept clear रखो optional student माने तो माने टिके डीपर जीवा को पड़ियो टिके डेप्थ न हले बिल्कुल मार्क मिलिबोनी कि इंटरव्यू तमे कहि परिबोनी इंटरव्यू रे 100% तमरो तमरो पचारंती डिटेल्स ऊपर सो एटा कोन हला जियोथर्मल एनर्जी एटी लिखुची हला जियोथर्मल एनर्जी को कैटेगरी रे आसो इट इज रिन्यूएबल एनर्जी माने ऑफशोर अंतरे आसो हला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हला वेरी बेसिक जिंस तो ता माने कोन आइसलैंड इज सपोर्टिंग टू द प्रोसेस ऑफ Kyoto protocol of reducing the carbon you're reducing the carbon concentration in the atmosphere. So Iceland be role model माना जाए in terms of when it comes to the you're exploiting or harnessing your green energy, right? Green energy country जते हम कहबे. So हमें basically हमें जानले कि आइसलैंड ऊपर कंट्री दैट हाउ इट इज हार्नेसिंग एनर्जी. सो हॉट स्प्रिंग आउ गीजर्स या परे जदि मु देखेबी कि ओल्ड फेथफुल गीजर्स भी जानले. ओके सो एटा देखला परे एटी मु गोटे नॉर्मली गोटे लिखि दउची त मानको इजी रहइबो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स. हला एटा नोट करनबो गीजर्स आउ हॉट स्प्रिंग भितरे बेसिक डिफरेंस कोन बेसिक डिफरेंस गीजर्स आउ हॉट स्प्रिंग राइट. हॉट स्प्रिंग कौन रहइबो वाटर ठीक अछि hot water comes out simple language comes out to the earth surface in an explosive manner in an explosive way हैला explosive बहुत जोर रे फाटी सेटा बाहर करसियो explosive way. But here the water, okay, hot water comes out to the surface, to the earth surface, हैला apostrophe to the earth surface quietly शांत भाबरे. okay ठीक अछि शांत भाबरे आसे वेरी बेसिक डिफरेंस. तापर कोन रखिबा हॉट स्प्रिंग्स ए गीजर्स ऊपर they contain mineral rich एमाने भी सेम they also same एटी लिखि दोची mineral rich कोन रहइबो do same लिखि देली. mineral rich किए like example sulfur and calcium हला सल्फर आउ कैल्शियम समाने रहते एक्सेट्रा. वाटर टेम्परेचर केते वाटर टेम्परेचर इज टू हाई हला बॉइलिंग पॉइंट दैट इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बट एटी केते वाटर टेम्परेचर is amicable हला amicable माने human friendly amicable that is about approximate 35 to okay but जगह रे 30 to 40 degree में लिखुची. it is 30 to 40 degree amicable that is your 30 degree to 40 degree centigrade. okay it is centigrade it is लिखबी humans are not allowed to take bath not allowed to take bath ठीक আছে এটি human can take हैला human can take bath हैला take bath. so this is the basic difference between the hot spring and geysers. okay लिखला बेले मन रखो major point एटी देखला 1 point हैला 1 2 common point 3 and then 4 और भी हेई परियो तमे देखि परियो को एग्जांपल देबो को कंट्री रे अछि इंडिया रे भी अछि हैला बहुत जगह इंडिया रे जेम तुम कहली खास करके नॉर्थ ईस्टर्न
हिमालयन स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स और एकदम जब हम देखो हिमालयन स्टेट्स खास करके हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी हिमाचल प्रदेश छड़ा अरुणाचल प्रदेश रे पाइबो उत्तराखंड रे पाइबो सिक्किम रे भी पाइबो ओके मोस्ट ऑफ द हिमालयन स्टेट्स विल फाउंड इवन इफ तामाने नो जो पेनिनसुलर पार्ट रे नहीं यस इंडिया रे जदी हम देखिबो कि इंडिया रे को जगह रे जदी तमे देखिबो कि हॉट स्प्रिंग और गीजर्स अछि राइट इंडिया रो देन डायग्राम भी कलाबडे इंडिया कलाबडे तमे टिके ध्यान रखिबो right this is so india जदी हम देखिबा hot spring और geysers mostly ए जगह रे तमे एठी पाइबो हला हिमाचल रे पाइबो हिमाचल प्रदेश then this is your उत्तराखंड रे पाइबो सिक्किम रे पाइबो हला this is your सिक्किम हला अरुणाचल प्रदेश रे पाइबो अरुणाचल रे भी पाइबो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश देन असम दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रे ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे इवन इफ तमे जदी विंध्यास तळु को भी आसो हला इफ यू गो कम टू द यू नो विंध्यास तळु को भी बहुत जगह रे विंध्यास रे भी अछि विंध्यास तळु को भी तमरा आसो बहुत जगह रे तमे कर्नाटक रे भी पाइबो हला देन तमिलनाडु रे भी पाइबो देन योर आंध्र प्रदेश रे भी पाइबो ओडिसा रे हमर भी बहुत जगह रे अछि हला बहुत जगह रे दिस आर द यू नो लोकेशन ऑफ मैं लिखली कि लोकेशन ऑफ your geysers hot spring and geysers hot spring and geysers in india है so most of the vindhya तळु को भी हमर states जदी देखिबो you will find this one right so normally हमें देखबा कि but noted लिखु छी maximum concentration of hot spring of geysers and hot spring concentration of geysers and hot spring okay in india will concentration of geysers and hot spring is found at himalayan states himalayan states like Uti, like or such as Himachal Pradesh, then Sikkim, Arunachal, Uttarakhand, ये भी एक्सेट्रा बचले ता परे जदी देखियो तमे कम रे देखा जाय तमरा विंध्यास तळु को नो प्रॉब्लम सुनो इंडिया में आप कला बड़े प्रैक्टिस करिवो ठीक अछि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट प्रैक्टिस कले ही हिजो सिंदे नॉर्मल सिंदे बहुत बड़ कथा नो प्रॉब्लम आराम से हिजो प्रैक्टिस कले द मोर यू प्रैक्टिस द मोर वुड बी हेल्पफुल किछि सेमति बड़ जिंस नो राइट ओके सो हमें एटा डिटेल ले जानले कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पे तुमको बहुत हेल्पफुल एगुडा जोटा तुमको देखिली कि गीजर्स और हॉट स्प्रिंग केमते रहउची जियोलॉजिकल रीजन्स हमें जानले ओके जियोलॉजिकल रीजन्स जानले प्लस इंडिया रे भी को जगह रे देखले कि विंध्यास तळु को तमे भी एटी पाइबो जेमति हम लिखले दिस इज योर कर्नाटक रे अछि देन फॉर एग्जांपल तमिलनाडु रे अछि देन आंध्र रे भी अछि हला आ हमरो ओडिसा रे भी अछि देन एटी भी सेमति एमपी हला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ महाराष्ट्र रे भी तमे पाइबो एटी हॉट स्प्रिंग प्राय हला तो ए माने प्राय तो सब जियोलॉजिकल रीजन्स रे तमरो आटास थांदी बट जदी तुमको पचरा हबो इंटरव्यू रे देन यू हैव टू से दिस वन हला ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स माने मैं कहूची खास करके टू डीप डेप्थ नॉलेज रिकॉर्ड बिना डेप्थ नॉलेज रे तमे केबे भी मैक्सिमम स्कोर करि पारी बनी दिस इज वेरी ट्रू एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर ऑप्शनल दैट डेफिनेटली हेल्प यू in your not only in your optional paper also GS रे many paper including essays right so India रे तमे देखिले हमें को जगह रे तमर अछि hot spring और geysers okay so this is all about जोटा कि देखुछ तमे एटा सब पढिबो हला न्यूजीलैंड रे ओल्ड फेथफुल गुजर्स जोटा हम कहले कि योमिंग स्टेट इन यूएसए एंड हाउ इट इज एवरी 66 सेकंड रे एटा इरप्ट हुए राइट हाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड येलोस्टोन नेशनल पार्क राइट हॉट स्प्रिंग कथा भी हमें देखिले आइसलैंड कथा भी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अच्छा देन नेक्स्ट अनाउंसमेंट किछि करबी जेमति ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच जोटा कि ओडिसा सिविल्स रे
already online batch has already in full swing chalchi. UPSC offline batch also there, optional fine. So Mukavi, this is one of your best decisions that if you opt this optional, because practically बहुत जगह तुमको help होगा. Okay, बहुत सारा videos रे मैं पढ़ी, and also it will helpful. It is just to reach out the students and telling you the truth that regarding that one. As a mentor, this is the prime due to tell the truth and acknowledge you the the real facts about the civil service. जो तरह की तुम्हारा scoring वाला रहबर होगा. And also the GS batch, general studies batch also have started also, right? Those who are interested, they can contact me, or they can reach out me over this number 797-8090-972. They can reach out to me over this number, right? ठीक है जी. Hope this session is interesting to all of you. Okay, thank you so much. Thank you everyone. We'll meet again. पुणी मु आसिबि with interesting topics नेकी जोटा कि definitely it will be helpful for your for your understanding, right? Okay, have a good day. Take care. Bye bye. निजर ध्यान रखिबो. भलो भाबे मन देख पड़ो and do revise more and more. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you so much.